You did not start before of this meeting. No, I forgot to Uh, record. I missed some concepts. Okay, so this is the database, and the database have objects. Okay, so I have written these objects. Okay, so we will learn and we will try to understand what are these, right? So as you know, that table is using for storing the data in the form of row and column. Okay, and view is used for protecting Yeah. some data for security reason. Yes. Okay, and we will discuss what is the index. Okay, so let's suppose we have this table, right? And this table have 1 million record, right? So 1 million record equal to 10 lakh, 10 lakh. right? Right. 10 lakh. And this table have some duplicate record as well and null values. It's included duplicate. Okay, duplicate record and some null values. Null values. So let's suppose we have 2 lakh duplicate record. Okay, and I'm searching about the Hari data. Okay, checking the all identity. Okay, so what will happen when I will run the query? Okay, so when I run the query, this one, select asterisk from select asterisk from table, means EMP, right? Where EMP name, right? EMP name equal to Hari, right? So this asterisk, right? Star. This star will search all 1 million record, right? And 2 lakh duplicate as well. Okay, let's suppose for reading 1 million, it is taking 10 minutes. Okay, 10 minutes for reading 1 million, where we know like 2 lakh is duplicate value, right? So we have data where we don't want duplicate, because all the duplicate record is stored unnecessary. There is no use, right? So if I'll remove these duplicate record, so how much data left in the table now? 8 lakh, right? Exact data. So if this time I will run again same query, so for 1 million, it is taking 10 minutes. But for the 8 lakh, I'm sure it will take, let's suppose, 5 minutes. 5 minutes, right? So what happened? It will means increase the performance, right, of your query.
it will reduce your execution time. Right? Got it? So means index, when we will apply index in the table, it will remove all the duplicates automatically. Got it? Yes, no? Hello? Yes. 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 Hari, you? It's look like a subqueries. Sorry? It's like a subqueries. Hmm, no, I'm not writing any subquery. Okay. Index is a object. Okay. As per explanation, I can understand to retrieve the data from the database very fast manner. Right, right. Means it is a object. Okay, right? Let's suppose I have EMP ID, right? EMP ID, right? Which have duplication. Means 101, 101, 101. मतलब same data is there unnecessary in the table. Yes. So if I will apply index in this column, it will Okay. remove all the duplicates. Okay. Automatically it will remove. This is the nature of any database. Okay. Got it? Say once again, employee ID. Mhm. If I will apply index on EMP ID, it will remove the duplicate value from the table. Okay. सर Okay. इंडेक्स लगने के बाद ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी तो कन्वर्ट करता है सारे टेबल को. हाँ, राइट, वो भी करता है. क्योंकि देखो, क्योंकि इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक ऑब्जेक्ट है और ईच ऑब्जेक्ट्स हैव सम प्रॉपर्टीज. तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पूरी वन बाय वन जब हम प्रॉपरली उसको उठा करके देखेंगे. ओके. राइट? तो अभी मैं बता रहा हूं कि ये पॉइंट तुमको जो है ना पढ़ने हैं. ठीक. क्योंकि जब इंडेक्स का हम और डीपली पढ़ेंगे ना तो इंडेक्स हैव टू टाइप्स, क्लस्टर और नॉन क्लस्टर. क्लस्टर. These are the all interview questions. Okay, so you have to go through with best tutorial. If I'll get, I will share. सर एसक्यूएल सर्वर की वीडियो आपके चैनल पे भी है कोई से पे? नहीं, अभी तक तो यार मैंने डाला नहीं कोई भी. अच्छा, नहीं एसक्यूएल सर्वर का तो काफी कुछ मटेरियल है वैसे यूट्यूब पे. हाँ, बहुत सारा मिल जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे हैं. हाँ, ये मैंने ठीक है, चेक किया. तो आप मतलब कोई भी जो बेस्ट समझ में आ रहा है. हाँ, अपने ये तो हम कवर अपने को कर तो ले. क्या है कि कॉन्सेप्ट समझना है. राइट? ठीक. कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर ही देते हो, बाद में हम वहां से कर लेंगे कवर. हाँ, राइट, यही करना है तो जल्दी होगा. और तुम भी अगर अपनी तरफ से थोड़ा जो है ना कोशिश करोगे ना तो अच्छे रिजल्ट आए. ओके, तो you got it right. What is an index? In short, if I'm asked, then what you would say about the index? Index it doesn't allow the duplicate values. Right. Hmm. Correct. So the first thing, if someone asks what is the index,
The main thing is it will remove all the duplicates from the table. That's it. If you are not going in the depth, but if you will say this line, interview will be means that positive things will go in interview mind, right? Yes. अगर आपने इतना ही बोल दिया ना तो इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं यार ठीक है, मतलब कुछ तो बता दिया इसने, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन उसका बताना है, राइट? सो सेम, if I'll say what is a store procedure, so I just giving overall, okay, because I'm thinking you know nothing about the database. If you know, that is okay. Okay, so my intention is going from the very basic. Okay, so one by one we will start. We'll take table. Tomorrow we will do practical. Okay, and view index one by one will go. Okay, so because today I not installed Power Builder yet in my system because I get ready late yesterday. Okay, so I waste a lot of time in installing SQL Server in my system. May I know what is the stable version of SQL Server? SQL Server, it is a 2019. Okay, earlier it was not work, but I think I have installed 2008 as well, so it is working now. It is working in my system. Well, about operating system. Operating system. See, if you will see this one 18, it is 18. It is a stable version. Okay. So if you want 2008, you can download in your system. That is enough. I have a setup and I will upload. Okay. So you can download from the that common drive. Okay, and install. That is very easy actually, and it will be work. That will be work. If you want, then you can do right away, or you can do later. Hari? Hello. So this is the setup I have. Okay, I will share this one on the drive. So from there you can download. Okay, will be fine. Okay. So let's understand another object about the procedure. So what is a procedure? Any idea? रिंकू आता है क्या? हेलो, हाँ नहीं नहीं सर, इसका कंफर्म नहीं है। हाँ, देखो ये मैं जो ना, मैं जस्ट इसकी वजह से बता रहा हूँ कि जब हम पढ़ेंगे ना तो तुम्हारे माइंड में होगा कि अच्छा ये हमने तो पढ़ा था यार, है ना? जब हम ये डेप्थ में पढ़ेंगे ना तो एक ये पता होगा, क्योंकि मे बी तुम भी बीएससी से मतलब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो, ठीक है? जी। तो
इसकी वजह से। और यूपी में तो अगर बीटेक वाला भी बंदा बीटेक मतलब बीटेक कंप्लीट कर लेना, उसको भी अभी टेबल बनाना नहीं आता वो। हाँ का तो ये हाल है। हाँ, नहीं अब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, मैं देख लूंगा खुद से यूट्यूब। जहाँ पे दिक्कत आएगी आपसे कंफर्म कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भाई, अपने तरीके से पूरा तैयारी करो और फ्रीलांसिंग करो, वो भी थोड़ी है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें काम मिलेगा ना। काम हम्म, काम ऐसे थोड़ी मिलता है। ये तो है। काम मिलता है जब आप कुछ कर लेते हो, जब कुछ कर ही नहीं पाते तो पैसा कौन दे। तो सर डिश टीवी से कब गए आप? जिस टीवी पे मैं 15 आउट हो गया था, 13 to 15 मैंने काम किया था। तो काफी लंबा टाइम हो गया इधर से जाओ भी, वहीं पे हो जब से सेटल पूना में? मैं बैंगलोर में था 5 साल, बैंगलोर से पुणे आया। तो सर प्रॉपर कानपुर के हो आप इधर? हाँ हाँ। अच्छा। ओके, so store procedure, right? Store procedure means SP. Okay. So in last class we saw one store procedure, right? SP tables. जी सर। So some store procedure is means will be available predefined, which is used by system. Okay, and some procedure you need to create, means if overall if we'll see uh, so we can say that there are two types of store procedure is available in the database. One is predefined and the second is user defined, right? Predefined or user defined, right? So predefined is used by system, उसको हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, if we know what use we can use this store procedure, so we can use, right? Okay, बट जो यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है वो यूजर क्रिएट करता है, मतलब कि हम लोग क्रिएट करते हैं। सो स्टोर प्रोसीजर इज अनदर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाई वी आर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर, राइट? तो मैंने एक सेलेक्ट लिखा था, राइट? सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम emp where emp name equal to हरी, राइट? इस तरीके से मैंने लिखा था। तो लेट्स सपोज एक ये नॉर्मल क्वेरी है, राइट? एंड इफ आई वांटेड टू चेक हरी डिटेल, ओके, तो इन नॉर्मल मोड if I'll check record 2 to 3 times or many times in a day, right? So each time I need to manually run, right? For getting the data. For each time I need to write the same query, right? So for removing this task means writing every time when it is required this query, right? So we can use store procedure. So what this object will work, it will uh,
give a functionality to user to write once, to write code once and use same code in many times, and use Many times. many times, right? So this feature we will get by store procedure. With using store procedure, this data will keep as a permanent in our database. Is it? Right, means let's suppose, so if we create uh, so for creating a store procedure, we have a statement, create, right? Create store procedure और उसका name, right? Name मैंने दे दिया A, okay? And inside store procedure, I will write this query, this query, okay, this one, Okay, okay, okay. okay. Here I will write. So if I want to run this query, I will run only A. It will run behind this query and give the result. So this time it is not required to write query manually. Got it? Hello? Got it? Yes, yes. Mhm. So store procedure object is giving a facility to user to write a code once and use many times. There is no need to write code again and again, wasting your time and effort, right? So function in other store procedures, okay, and function is also doing the same thing, okay, but this function have some limitation. Any function have some limitation that we will understand when we will exactly use, okay, in next classes, okay. So what is the difference? Means store procedure and function doing the same thing, but store procedure have some more features on top of function, okay. Function HVR. Function. Can I explain the function afterward? This one, right? Uh, Function have limitations. function have some limitation, okay. That limitation we will discuss when exactly we'll start using function, okay, in the next classes. I just given the overview only today. And what is a temp table? Okay, so temp table is using for storing temporarily data, okay. And we have two type of uh, temp table. One is local and
global. Okay. So temp table is similar like your main table. Okay, but these are used for the temporary use, permanent नहीं होती है वो. Okay, local जो टेबल है वो locally accessible होती है in a single session. तो ये काफी मतलब टेक्निकली डिस्कशन हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि अभी वो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को. ठीक है. ठीक है. हाँ, तो बस इतना समझो कि वो टेम्परली डेटा स्टोर करने के लिए होती है. ओके, दो प्रकार की होती है, लोकल और ग्लोबल. ओके, लोकल होता है वो सिंगल सेशन पे एक्सेस होती है. जो ग्लोबल होती है वो हम नंबर ऑफ सेशंस पे यूज कर सकते हैं. ओके, बट ये पावर बिल्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरव्यू के, वो एक्चुअली बड़े बड़े टॉपिक्स पे होते हैं. मतलब ये सी की ये ग्लोबल टेबल क्या है, जबकि इतना ज्यादा उसके अंदर यूज नहीं होता. बट फिर डीप नहीं एक्चुअली क्या होता है कि बिहाइंड वी आर बिहाइंड पावर बिल्डर इज यूजिंग डेटाबेस, राइट. सो डेटाबेस all concepts will be clear, right? हाँ, ये तो चेक करें क्लियर है नहीं है डेटाबेस के कंसेप्ट, या वैसे पावर बिल्डर सीख लिया. राइट. तो अभी लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं ट्रिगर पे, राइट. ठीक. तो ट्रिगर इज itself एक्सप्लेनेटरी है, राइट. मतलब ये इसका नाम खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को जी. कि कुछ ट्रिगर करने के लिए होता है, मतलब कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाना कुछ, राइट. So let's suppose we have this query, right? This one. Okay, this query, and we want trigger this query in some situation. और वो सिचुएशन क्या हो सकती है? वो सिचुएशन होती है कि अपडेट के टाइम पर हो जाए, और या तो फिर डिलीट के टाइम पर हो जाए, और या तो जो है इंसर्ट. तो ये जो ना 3 सिचुएशंस हैं वेयर ट्रिगर ऑब्जेक्ट हेल्प टू एग्जीक्यूट एनी क्वेरी. समझ में आ रहा है क्या? जी सर. ओके, सो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, noted down. Okay, and search today and try to learn at least what is this, what is what, right? What are the working for this specific object, why we are using, at least ये तुमको पढ़ना है. ओके सर. Okay, और till tomorrow class. Okay, जी सर. any confusion, Hari Prakash? No, there is no any confusion. I will share good source where you can get the all objects. Okay, so you can go through. If you will go through, so it will help to understand when you will start practice. Okay, ओके. that's why I have given overview
so that you can also relate what is database, what I want to try to understand you. Okay. Okay, sir. So if doesn't have any doubt, then we'll connect tomorrow. Or wanted to discuss something. Okay. Then bye. We'll connect tomorrow. Okay. Ah, Yeah, bye. sure.